સુરતમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા મુખ્ય 3 માંગોને લઈને દક્ષિણ ગુજરાત વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના કુલપતિને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આવેદન આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા। સુરતમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા મુખ્ય 3 માંગોને લઈને દક્ષિણ ગુજરાત વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના કુલપતિને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી। આવેદન આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં એનએસયુઆઈના કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા। વધુમાં ચીમકી આપતા જણાવ્યું હતું કે આગામી સિન્ડિકેટ એજન્ડામાં તેઓની માંગનો સમાવેશ કરવામાં નહીં આવે તો એનએસયુઆઈ દ્વારા સિન્ડિકેટ મીટિંગનો વિરોધ કરવામાં આવશે। તેઓની માંગ આ પ્રમાણે હતી। નંબર 1, યુનિવર્સિટી દ્વારા કોલેજો અને ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિક્ષણ ફી સિવાયની અન્ય તમામ ફી માફ કરી શિક્ષણ ફીમાં ઘટાડો કરવામાં આવે। નંબર 2, સુરત શહેરની તમામ બીસીએ કોલેજમાં 60% કરતાં ઓછા ટકાવારી ધરાવનાર એક પણ વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ મળેલ નથી, ત્યારે સુરતની બીસીએ કોલેજમાં વર્ગોની સંખ્યા તેમજ વર્ગ 1.5 સીટોમાં વધારો કરી બીસીએની સીટો વધારવામાં આવે। ને નંબર 3, તેમજ હોમિયોપેથિક ફેકલ્ટીમાં તમામ સેમેસ્ટરની પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવામાં આવે તેમજ સીડી પચ્ચીગર હોમિયોપેથિક કોલેજના 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને તારીખ 30/9/2020 રોજ यूनिवर्सिटीમાં આપેલી અરજી पर योग्य कार्यवाही કરવામાં આવે। आज छात्रों की मांगों को लेके हम कुलपति जी से मिलने आए हैं। मुख्य रूप से मांगे यही हैं कि एक तो जो फीस माफ़ी का मुद्दा इस कोरोना कालखंड में जो छात्र वर्ग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, फीस माफ़ी की मांग जो है लंबे समय से एनएसयूआई उठाती आ रही है और उसको लेके स्कूलों में तो इन्होंने अभी कुछ माफ़ किया है, लेकिन कॉलेजों में कैंपसों में कहीं भी माफ़ नहीं किया है। बड़ा मुद्दा ये है कि आप देखेंगे कि जो एक सामान्य तबके के लोग हैं, जो एक किसान परिवार से आते हैं, वो लोग बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए हैं और हमारी मांग यही है कि जो फीस माफ़ी की जो मांग है एनएसयूआई की, वो सरकार पूरी करे। दूसरा, जो छात्रवृत्ति और जो फेलोशिप अटकी हुई है जिन छात्रों की कोरोना कालखंड में पिछले 8-9 महीने से जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये छात्रवृत्तियां दी जा रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनका पैसा जो है छात्रवृत्ति जो पात्र है छात्र हैं उनके खातों में भी आए नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि जब सरकार सुध नहीं लेगी तो छात्र जो है शिक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो एनएसयूआई एक जागरूक छात्र संगठन होने के नाते इन सब मुद्दों को लेके जो है आज कुलपति जी से मिलने आया है। साथ में नए सत्र को लेके कोई तैयारी नहीं है, प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है और ना ही गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है। तो जब तक ये मांगे जो है छात्रों की मानी नहीं जाएगी और इसके शिक्षा के नए सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, छात्र भ्रमित होगा तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा। इस मांग को लेके हमारी एनएसयूआई की यूनिट आज मांग करने आई है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पहले गांधीवादी तरीके से शुरू करेंगे और अगर नहीं मानी तो सड़कों पे उतरेंगे और उसकी जिम्मेवार ये राज्य सरकार और ये प्रशासन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।